हेलो एवरीवन। आज है संडे और आज हम वीडियो स्टार्ट करेंगे अपना इंग्लिश का जो भी है सेकंड वीडियो रहेगा हमारा। और इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश मतलब जो लैंग्वेज है उसको हमारा मतलब प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, हम कैसे नया सीख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और जो भी अपना कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए भी हम अपना इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं। तो साथ में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, साथ में सीखेंगे जो भी मतलब क्वेश्चंस रहेंगे मैं अपनी तरफ से उसका एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई करूँगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस वगैरह है जो मैंने पहले ही देखे, जो भी मिस्टेक्स रहेंगी वो पता चल जाएगी। और जेन्यूनली इससे आपको पता चलेगा कि मतलब मैं कैसे सोच रहा हूँ और मेरी प्रिपरेशन कैसे आगे बढ़ रही है। जो अम, इसका मतलब ये वीडियो बनाने का यही मतलब हेतु है कि अ, जो अपने ग्रुप इंटरनेट के ऊपर स्टडी विथ मी एंड ऑल, so can study together and help each other. Okay, we start the test and find out what is the outcome. And I like this setup of MCQ questions. So we'll do paragraph later, मार्क करके रख देते हैं क्वेश्चंस। इसके ये कर सकते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। कलर कौन सा ले, ठीक है ब्लू। Which of the following is synonym of the term foreclosing? The lawsuit intelligence absurd Play Store effective foreclosing app developers app stores from direct intelligence. Google imposes technical barriers that strongly. Google built Android a series of misleading security warnings and other barriers that discourage users from downloading apps for any source outside Google's Play Store, effectively foreclosing app developers. मतलब बंद करना है कुछ। Defaming, grappling, precluding, withstanding. Google has not Android to serve as open source for withstanding foreclosing मतलब बंद। precluding accessing, ठीक है withstanding मार्क करते। after the dramatic events, which of the following word is misplaced misspelled, ठीक है ड्रामा complexities complexities ये गलत लग रहा है। Characterized, excitement, anxiety, X anxiety, complexity, characterize, excitement, X anxiety। बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। तो क्या करें। ई मार्क कर देता हूँ। तो कंफ्यूज, yet this apparent commitment, performance, performance substantive, compulsion, yet this apparent
परफॉर्मेंस सब्सटेंटिव गलत लग रहा है मुझे तो। और ठीक है, डी मार्क कर देते हैं। The excessive obsession over excessive obsession or unhealthy, dangerous, और रिप्लेस करना है, नहीं मिसपेल्ड हुई, डेंजर और डेमोक्रेस, एक्सेसिव की स्पेलिंग गलत है, एक्सेसिव। ठीक है। Despite the completion of delimitation delimitation अनाउंस की स्पेलिंग सही है, एक्सरसाइज की भी सही है। डी कंप्लीशन, सब सबकी स्पेलिंग सही लग रही है, क्या करें अब। कंप्लीशन, डिलिमिटेशन पर। क्लासिकल मास पार्टी which rises from societal and essentially की स्पेलिंग गलत है। जो मतलब इजी लग रहा है बहुत ही इजी, बाकी कंफ्यूजिंग ही है ऑप्शन, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ओके, एंड फाइनल ऑप्शन से देखेंगे, बी, बी, डी, immediate increase in, हाँ, an increasing demand for intermediate, see, an increase in non production will lead to an immediate demand for intermediate and final agriculture product. An immediate increase in production will lead to an immediate increase in demand for intermediate and final agriculture product. ये आएगा। Then नहीं, E, high performers are more vulnerable to job dissatisfaction, हाँ ये हो सकता है। हाँ, ई, ई डी, to job dissatisfaction because they tend to expect more from their jobs than low performers। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी आप देख सकते हो, लेकिन ये मुझे पहले ही मिल गया तो हो गया। देयर इज इनफ एविडेंस, आप रीडिंग की प्रैक्टिस कर लोगे तब आप भी मतलब इजीली ये समझ पाओगे कि कौन सा स्टार्टिंग स्टेटमेंट होना चाहिए। देयर इजंट इनफ एविडेंस, डी, बेस्ट, डी, pursued us that there isn't enough evidence based policy, but mm, persuade us that
Honesty is the नहीं इकोनॉमिस्ट है या हाँ ये वो होगा सी डी persuade that honesty is the honesty is the best policy but there isn't enough evidence ठीक है um, of the current events be of ancient working knowledge working knowledge inter working knowledge of ancient history cv ancient history d is necessary for intelligent interpretation of current event ठीक है formation of stars formation of stars physical concept D physical concept which is gravitational नहीं C one simple physical concept which is gravitational instability lies behind the formation of star ये हो सकता है one simple physical concept दो सेम ऑप्शन से CDB one simple physical concept which is gravitational instability one simple concept one simple physical concept which lies behind the formation of stars is gravitational instability हाँ ये सही लग रहा है चलो डी न्यू रिसर्च सजेस्ट हाँ डी से ही स्टार्टिंग है सबकी सजेस्ट नहीं न्यू रिसर्च सजेस्ट मीडिया में नॉट बी वायर नहीं न्यू रिसर्च सजेस्ट our instinct to communicate via video chats and social new, new research suggests our instinct to communicate via video chat and social media may not be the optimal choice. DAECB इसे साथ साथ वाले ऑप्शन दे सकते हैं देख कर ही मार्क करना चाहिए select the most appropriate option in option to fill in the blanks number one that she would either and her idea was she would either land from the depopulating tax upon its beauty or perish after the approved fashion of all heroines in her time. She was either abandon the land from depopulation tax upon its beauty perished or fashion. Accordingly, and although we do not find it to be leap year, she she repentance refuted her father, the Grand Vizier, to make an offer to the king of her hand.
She dismissed her father. She deputed, retained, refuted, ये हो सकता है, but accepting it now, he gives all parties very in very ingenious to and very banal to understand. The Grand Vizier or the Grand Vizier, he has not the slightest reason of giving one iota of his vows of his relation, therefore stood upon marrying the king, did actually marry him despite her father's. Fifth question. Number one. Are number two. Fifth. Seventh. Third. Fourth. But accepting it now, he gives all parties very ambiguous. ये नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है. वेरी ऑब्सक्योरली, ये भी नहीं आएगा. वेरी मॉड, ये भी नहीं आएगा. वेरी distinctly, feasibly to understand that the correct. Distinctly आया. Instead upon marrying the king did actually marry him despite her father's not to do anything. Father's um, atrocious advice not to. When she would did marry, I like it was her beautiful guys the open nature of case would allow. It seems, however, that is politic damsel had very little plot in her mind. One night of her wedding, she contrived forget species to have her sister occupied all sufficiently near that while कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पैसेज क्या बात करना चाह रहा है. Either land from depopulating tax upon its beauty or perish after approved fashion of all heroines in all attempt accordingly, and although we do not find it to be leap year which makes sacrifice Metrosius, she her father grand vizier to make an offer to the king of her hand. This hand, okay, king eagerly accepts, intended to take it all event and had put off matter from day to day only. But but in accepting it now, he gives all parties very did actually marry him despite of her father's not to father's atrocious advice. कुछ समझ में नहीं आ रहा. No, cannot even recognize the tone of the passage. Uh, because of the king, they are uh, because of the king वो इतने मजबूर है कि किंग से शादी करनी है. Stick one night of the wedding she contrived upon I forget what spacious modesty to have her sister occupied a couch. What spaciously
honor. 7. A little before cock-crowing, she took care to awaken the good dash of her husband. Good president. गेसवर्क ही करो सिर्फ इसमें. That is political damsel had very ingenious, very inept, very clumsy little plot in her mind. The new car model is cheaper than. ये क्वेश्चन हम सबमिट करने के बाद करेंगे. Morris has been pacing in lobby of hotel since 8 o'clock in the morning. इसको रिवाइज करना पड़ेगा. सीन्स कब आता है और पॉइंट ऑफ टाइम कब आता है. ठीक है. कितने अटेम्प्ट की. 19 अटेम्प्ट 11 स्कोर 68% एक्यूरेसी मतलब लास्ट के देखते हैं. ओके जो पैराग्राफ है उसके सभी रॉन्ग है. ये देखो बाकी स्टार्टिंग के मिसस्पेल्ड वर्ड तो सही है. फॉर क्लोजिंग का मीनिंग पैसेज के हिसाब से देखना है. ठीक है. पहले यही फिल इन द ब्लैंक्स को ये करते डिकोड करते क्या है. सेकंड नंबर शी हर फादर ग्रैंड वाइजर. तो मैंने कौन सा ऑप्शन किया था. ये किया था. सी डिस डिप्यूटेड. डिप्यूटेड का मीनिंग मीन्स टू अपॉइंट. शी अपॉइंट हर फादर ग्रैंड वाइजर टू मेक एन ऑफर टू किंग ऑफ हर हैंड. द बेबी सिटर वॉज डिप्यूटेड. ओके. ठीक है. फिर डायरेक्टली ऑप्शन 5 पूछा है. इनकरेक्ट. सीक्वेंस में ही जाते हैं. फर्स्ट तो छोड़ ही दिया था. दैट शी वुड ईदर abandon for redeem the land from depopulating tax upon its beauty perished after. The given sentence is talking about Shilesradi, the heroine of the story who tried to regain possession of the land. Therefore, the most appropriate word filled in the blanks is redeem. Okay, the word redeem means to regain possession in exchange of payment. She had to redeem her house from the bank. Abandon, forfeit, lose, or to be deprived of. Condemn. Express complete disapproval of things. Relinquish का क्या मीनिंग है. Voluntarily cease to keep or claim. Give up मतलब खुद से उसका त्याग कर देना. ठीक है. सेकंड नंबर हो गई फिलिंग द ब्लैंक्स. 7. ये टाइम पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है. नैप का टाइम हो. तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन 3. But accepting it now, he gives all parties very
The Grand Vizier has no Grand Vizier. He has not like distinctly. अच्छा मैंने करेक्ट अटेम्प्ट किया है फिर भी वापस अटेम्प्ट कर रहा हूँ. Therefore, the most appropriate distinctly in a way read distinguishable sense clearly. Number four. Did marry him despite her father's excellent advice. You're talking about marrying despite her father's good advice, not to so. Therefore, the most appropriate. Okay. Sixth. Mm, on the night of wedding, she contrived upon. I forget what species pretends to have her sister. Pretends means an attempt to make something that is not the case appear true. इसके लिए प्रिटेंस प्रिटेंड करते हैं ना लोग से यानी क्या टाइप से कैसे इन्होंने ये बना दिया सेट ऑक्यूपेशन दे ऑक्यूपेशन नहीं आएगा शी इज अ राइटर बाय ऑक्यूपेशन ये हो सकता है द फ्लैट्स विल बी रेडी फॉर ऑक्यूपेशन रेडी टू ऑक्यूपाई आएगा ऑक्यूपेशन बाय मार्च ईव वर्डिंग शायद गलत यूज किए फर्स्ट तो किसी भी हालत में नहीं आएगा सेकंड आ सकता है बी बोथ बी एंड सी बोथ बी एंड सी ऑक्यूपेशन correctly used as a noun stable the patient is in a stable condition there are two horses in the stable a cat was beneath the stable टेबल आ सकता है स्टेबल के नीचे कैट क्या कर रही है ए एंड बी फोर पीपल वेर किल्ड इन द कोलिजन अमोंग कैसे आ सकता है ट्रक एंड टैक्सी ठीक है सी देख लो अमोंग इज इनकरेक्ट यूज फॉर मोर देन टू थिंग्स दो से ज्यादा थिंग इसके यहाँ पे करेक्ट क्या आना चाहिए था बिटवीन आना चाहिए था दो ही चीजें है ना ट्रक एंड द टैक्सी इफ आई वॉज अ मिलियनर वुड नेवर वर्क अगेन इफ इफ आई वेयर आता है आई के साथ वेयर ही आता है आई वॉज नहीं आता देखो इफ आई वेयर द प्रेसिडेंट ये ग्रामर के रूल्स है ये आपको क्या बोलते हैं समझ के तो लेने पड़ेंगे नहीं लेने पड़ेंगे कोई एक चीज़ कर लो समझना मतलब इजी है रटने से कंफ्यूजन हो जाता है टू में टू माई सरप्राइज आई सॉ टू स्ट्रेंजर्स कमिंग आउट ऑफ टू माई ये टू का यूसेज गलत है टू माई सरप्राइज ये देखो टू मच वो गलत टू यूज कर लिया है ही लैक द पावर he lacks the power of imparting though he is a good mathematical scholar एक ही पर्सन है ना तो लैक्स आना चाहिए
यहाँ पे पावर ऑफ इम्पार्टिंग दो ही इज, ठीक है। देखो, lack can be used as both as verb as well as noun, must be replaced with lack, okay। छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर लिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन करके हम 20 तक तो पहुंच सकते थे इस एग्जाम में। ये बस वो पैराग्राफ मुझे तो नहीं समझा, आप लोगों को समझा है या नहीं मुझे नहीं पता वो। आ, ये जो भी जो क्वीन बनना है इनको, कोई भी नाम भी नहीं मैं स्पेल कर पा रहा हूँ, कहाँ से निकाला इन्होंने ये पैराग्राफ। इन्वायरमेंटलिस्ट calls for fisheries to move away from the carbon spew. Calls at calls up fisheries to move away from the calls up, call for fisheries। क्या लगता है ये कॉल अप, मुझे नो करेक्शन लग रहा है। Call for fisheries to move away from, call for करते, call up means to order or summon together for a duty, okay। For means to make a request, okay। अ, मुझे लगा ऑर्डर, no worries। The humanitarian approach that has been expected to be the cornerstone approach, the cornerstone of the approach to this conflict have not always been discernible, have not always been, this conflicts has not always been, has किधर है वो देखेंगे, has not always been, is not of the approach to these conflicts has not been all, ये देखो स्पेलिंग मतलब आगे पीछे कर दिया अर्जेंट, has not always been, plural form of the word verb have is incorrect, singular। Morris has been pacing into lobby of the hotel since 8 o'clock in the morning. Form and since are both preposition used to refer the time. Aaron is warned against strong painkillers, lest he should not get addicted. Lest he should get. Aaron is warned against strong painkillers, lest he should not get addicted. At least he should not get, तो नहीं क्या यूज है लेस्ट ही शुड गेट, लेस्ट का मीनिंग ही नहीं पता। लेस्ट इज अ कॉन्जुगेशन दैट मीन्स टू अवॉइड द रिस्क, ओके। नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आएगा विल रिमेंबर we will remember about lest. Lest is a conjugation that means to avoid the risk of, okay। Okay, there are 40 questions overall. Okay, in that we would have easily skipped this paragraph of 7 fill in the blanks. We might have done the easiest one or two questions. Anyway, let's move on to, I don't know for this exam if there are 40 questions, so we have to complete it. I, we need to complete in 40 minutes. Then we should skip the paragraph. Look at this paragraph.
enormous, gigantic, ginormous. ये ये गलत है। ये कंपल्शन, स्पेलिंग ढूंढने में गलती की है। सब्सटेंटिव, अपेरेंट की स्पेलिंग गलत है। APPARENT इज नो अपेरेंट होता है RENT। ठीक है। सब्सटेंटिव किस मार्क किया। फॉर क्लोजिंग, प्रिक्लूडिंग। प्रिक्लूडिंग का क्या, प्रिवेंटिंग हैपनिंग और मेकिंग इम्पॉसिबल। फॉर क्लोजिंग रूलिंग आउट और प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग ये होता है। विथ स्टैंडिंग मतलब उसको रहने देना, रिमेनिंग अनडैमेज्ड। प्रिक्लूडिंग, ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, किसी को मतलब ये देखना है। एज मैनी एज 36 US स्टेट Washington DC has been filed for lawsuit against Google. क्यों lawsuit? Alleging that the search engines aren't control over the Android App Store app extraordinary contradicts con a lawsuit through series of exclusionary contracts. The other anti-competitive anti-competitive conduct in Google Play Store. Google has deprived Android users of robust competition that could lead greater choice and innovation while significantly lower prices for mobile apps. The New York Attorney General James and the coalition मतलब क्या बोलते हैं, टीम अप, टीम बनाना, कोalition की सरकार बनती है ना दो पार्टीज के बीच में, जैसे कोलिड अटॉर्नी जनरल ऑफ यूटा, यूटा एक सिटी है, नॉर्थ कैरोलिना और टेनेसी है, तीन इसकी ये है। also accused गूगल ऑफ रिकरिंग एप्स डेवलपमेंट सेलिंग इन ऐप डिजिटल कंटेंट टू परचेस 30% रॉयल्टी। ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब पढ़ा हुआ है मतलब ये इसकी न्यूज़ पता है मुझे। जो गूगल से जो भी बिलिंग रहती है वो उसका 30% कट ले लेता है। जो भी क्रिएटर रहता है, जो भी कुछ बनाता है गूगल पे पोस्ट करता है, मतलब प्ले स्टोर के ऊपर जो डालता है उससे दे टेक 30% टेक। गूगल हैज सर्व गेटकीपर ऑफ इंटरनेट फॉर मेनी ईयर्स एंड मतलब जो इस सब का प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा था वही इस चीज़ में मतलब पैसे बनाने का काम कर रहा है। डोमिनेंट्स लीगली स्क्वॉश कंपटीशन इट्स फॉर प्रॉफिट ऑफ 10 billion through its illegal conduct. The company has ensured a large numbers of million Android people only Google for the millions of applications they may choose to download to their phone and tablet, she said. Worse or yet, Google squeezing the life blood out of millions of small businesses and seeking complete the loss of damages distribution. Google, specifically the Google for many years. The loss of Google buys of potential Google. Thus, the Google is unlawfully trying to use Google's payment processor, which is separate service which separates market for payment processing within apps to distribution through Google Play Store by forcing Thai extract exorbitant processing fee for transaction as high as 30%, and that's higher the payment processing fee charged in competitive market retail. According to the New York Attorney, what are the consumer forced to do forever? Google's consumer forced to they are forced to download the specific app from app. They are they are being asked to make apps that use Google as middleman so they get commission.
apps that use Google as the middleman. Google's consumer कीवर्ड है कंज्यूमर ढूंढना पड़ेगा गूगल स्टोर यूज गूगल बिलिंग एज अ middleman forcing app consumers to pay Google's commission. They are forced to end up paying Google's commission as a middleman. हाँ यही मार्क करना था. That use Google as a middleman to take it. They are forced to end up paying for Google's commission. इधर भी पढ़ा था. Uh, what have the states in US accused of Google? Google is being accused of spying on Android users. Google is mining data and auctioning data. They are alleged Google violating law through their iOS. No. They are accusing Google of holding back benefits for Android users that are provided is accused of spying. iOS का mention Google builds an Android series for closing OEMs. ये भी नहीं आएगा. एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा. गूगल इज बीन माइनिंग डेटा एंड ऑक्शनिंग डेटा. गूगल इज अक्यूज्ड ऑफ स्वाइंग. Android is mining their data for marketing purposes. They are alleging that Google is violating laws through Android App Store. हाँ यही मेन तो चीज थी. हाँ. What does coalition means in context of the passage? Okay, जो मैंने समझाया भाई. The action of partitioning or dividing up territory or the amount of portion of resources assigned to particular recipient, the alliance of combined action, especially a temporary alliance, the action of ending, the action of making something poorer in combination. ठीक है, temporary alliance एक्सप्लेन किया है मैंने, बार बार नहीं करेंगे. बाकी क्वेश्चन देख लो. इनलीगली क्या कर रहा है गूगल अकॉर्डिंग टू द एलिगेशन? हाउ गूगल preventing consumers from downloading the app. Will to extract unnecessary higher fee from consumers. ठीक है. Oh, this is it. We are now ending the video. I hope you like the video format. Thank you for watching. Thank you. बताओ फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या मतलब रहना चाहिए. एक्सप्लेनेशन जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उतना ही कर सकता हूँ, और बाकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो अपना ये वेबसाइट ने दिया रहेगा क्वेश्चन आंसर के इसमें. बाकी मैं ट्राई करूँगा एडिशनल इंफॉर्मेशन लाने के लिए. और ये क्वेश्चंस में भी मैं ब्लाइंडली अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो एक ऑथेंटिसिटी है इसमें. नहीं तो कुछ लोग पहले प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाद में याद रख के पढ़ाते हैं. जैसे मैं नहीं करता. तो आप देख पाओगे कि मतलब जेन्युइनली क्या कंडीशन है पढ़ाई. I have started studying about a long time ago, but still I couldn't made any progress until I couldn't make any progress until I forced myself
to learn the English this way, because I'm making this video. It gives me motivation to study harder. It forces my brain to keep alive until the video ends or while recording the video. So I cannot play this game or anything in between. So it is advantageous for me and you also. Well, because of this, I may improve my communication skills, which are mostly required for the job interviews and all. So this time now I am about to end this video, and let me know what you think about it, and please add the comment. Thank you.